new student. Okay, I am your science teacher. Okay, मैं जो आपके मम्मी पापा के क्लासेस लेने वाली हूँ. My name is Rajmati Theng. Okay, my name is Rajmati Theng. I am conducting online classes from Buldhana. So, sorting material. So there are so many things which are present in our surrounding. For example, आप आपकी room ही observe करो. In your room, there are also so many things are present. So grouping the material on the basis of their properties and appearance is called classification. Okay, so if there are so many toys are present, then we make their group. ओके, सपोज यहाँ पे हमने सभी टॉयज मिक्स कर दिए. कुछ टॉयज प्लास्टिक के हैं, कुछ टॉयज सॉफ्ट टॉयज है, कुछ टॉयज क्ले के हैं, कुछ टॉयज रबर के हैं, कुछ मेटल के हैं, कुछ वुडन के. ऐसे सभी टॉयज हमने मिक्स कर दिए. ओके, एंड हमें अभी सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे? वुड के टॉयज अलग, मेटल के टॉयज अलग, सॉफ्ट टॉयज अलग, ओके, क्ले के टॉयज अलग. सो हम क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं. यस ना. हमें सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे? जिसकी प्रॉपर्टी सेम है उसका हम क्या करेंगे? ग्रुप बनेंगे. सो ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल based on their property and appearance is called classification. Okay, जो substance same है, okay, जो substance same है, जिसकी प्रॉपर्टी सेम है, उसके हम क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं. ओके, उसका हम क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं. सो ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी, उनके प्रॉपर्टी के बेस पे हम क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं. सो ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी एंड appearance is called classification. And in this chapter we have to study the different properties. Okay, some of the properties based on which material are classified. तो क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एंड डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक. जो सिमिलर है उसका सेपरेट ग्रुप बनाते हैं, जो डिसिमिलर है उसका सेपरेट ग्रुप बनाते हैं. सो ग्रुपिंग द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी and dissimilar property, that is called classification. Okay, so now in our house, in our school, in our room, there are so many things are present. तो हमें उसको क्लासिफाई करना है. सो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज लस्टर. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? that is the luster. What is the meaning of luster? Those substance which having the shine, जिनको शाइन होती है उसको बोलते हैं luster. So the shine of material is called luster, and the material that shine or appear shining, that is known as lustrous material. For example, gold की रिंग है, गोल्ड क्या होता है? शाइन करता है. सिल्वर है, शाइन करता है. कॉपर है, शाइन करेगा. स्टील है, शाइन करेगा. बट मेरे पास ये वुडन की स्टिक है, शाइन करते हैं क्या? मेरे पास वुडन का डस्टर है, शाइन करता है? नो. सो देर आर द, यस, वेरी गुड बेटा, यस, there are the two type of material, that is lustrous material and next one is non-lustrous material. Okay, so ये रूम में जो चीजें प्रेजेंट है, आपके रूम में जो चीजें प्रेजेंट है, आप उसके दो ग्रुप बना सकते हैं, lustrous material, non-lustrous material. So those material which are having shine or appear as a shining called lustrous material, and next one is non-lustrous material, जिसको शाइन नहीं रहती है. फॉर एग्जाम्पल वुड, वुड को शाइन है? नो. ओके, रबर, रबर को शाइन है? यस, वेरी गुड बेटा, yes, yes, very good. So material that do not shine, they appear dull, are called non-lustrous. For example, paper non-lustrous है, rubber
नॉन लस्टरस है, वुड नॉन लस्टरस है, कार्डबोर्ड नॉन लस्टरस है, स्टोन नॉन लस्टरस है। बट मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी है, लस्टरस, सिल्वर है, लस्टरस, आपके घर में कॉपर के यूटेंसिल हो गए, लस्टरस, स्टील के है लस्टरस, ओके, यस, क्रिस्टल्स lustrous, very good, diamond lustrous. So which are the example of lustrous? Lustrous means जिनको शाइन होती है, they are called lustrous. Gold, silver, copper, aluminium, iron, metal, alloy, steel, stainless steel, brass, diamond, all are the lustrous. And wood, rubber, paper, cardboard, non-lustrous. Okay, so understand the first property, that is lustrous and non-lustrous. Then second property, that is hardness and softness. Okay, hardness and softness. Those substance which are very difficult to compress, जिसको हम प्रेस नहीं कर सकते, which are very difficult to compress, that is known as hard substance. For example, ये डस्टर है, मैं उसको प्रेस कर रही हूँ, प्रेस होता है क्या? नो. ओके, स्टोन है, स्टोन को मैं प्रेस करती हूँ. ओके, देन नेक्स्ट वन, ब्रिक है मेरे पास, ब्रिक बिट, उसको हम प्रेस करेंगे, प्रेस होता है? नो. सो मटेरियल that are not easy to compress. Okay, material that are difficult to compress are called the hard material. For example, stone and diamond is the hardest substance in the nature. Nature में सबसे hard substance कौन सा है? Diamond. उसके बाद metals, metals भी कैसे होते हैं? Hard होते हैं. Now soft substance, those substance which are easy to compress, which are easy to press, that is known as soft material. For example, आप soft toys खेलते हो, बहुत से बच्चों के पास टेडी बियर है. ओके, सो सॉफ्ट टॉयज, कॉटन भी सॉफ्ट है, देन सॉफ्ट टॉयज है, देन फीदर, फीदर है, स्किन है, कैंडल है, वैक्स है, क्ले है, बटर है, ओके, स्पंज है, फोम है, रबर है. ओके, दोज आर द सॉफ्ट मटेरियल. Okay, and diamond is the hardest substance in the nature. Nature में सबसे hardest substance कौन सा है? That is the diamond. Now मैं कुछ material के names बताती हूँ, आपको बताना है कि soft है कि hard है. wood, wood, आप सिर्फ H और S प्रेस करो. ओके, देन wool, wool, woolen clothes soft होता है. stone, hard. Okay, then cotton, soft, cotton, cotton. Okay, foam, foam piece, soft, sponge, soft, pebble, pebble, marbles, hard, iron nail, hard, sponge, soft, silk cloth, soft. Okay, so understand the second property, that is hardness एंड सॉफ्टनेस. देखो आपके रूम में जो मटेरियल है उसको आप हार्डनेस एंड सॉफ्ट. आदित्य, आदित्य बाहर है, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस. ओके, तो हम मटेरियल को कौन से दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं? हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस. सो व्हिच इज फर्स्ट प्रॉपर्टी आई हैव टॉट यू, दैट इज lustrous substance, and next one is non-lustrous substance. Okay, so material are classified into lustrous substance, non-lustrous substance. Material is classified into hard substance and soft substance. Then material is classified on the basis of texture. Okay, texture में two type के texture होते हैं, that is rough texture and next one is smooth texture. Okay, so material
classified on the basis of texture. That is, first one is rough material and next one is smooth material. So when we touch the substance, yes, when we touch the substance, then we feel that the material is rough or smooth. So material that have uneven or irregular surface, okay, जो मटेरियल का सरफेस कैसा है, irregular है, uneven है, that is called rough material. And those material having the even surface, okay, जिसका सरफेस कैसा है, even, that is called smooth material. For example, this board is smooth, okay, but this duster is not smooth. Duster कैसा है, rough है, okay, duster कैसा है, rough है, and this board is smooth. आपके घर में डाइनिंग टेबल होगा, उसके ऊपर ग्लास का टॉप होता है, कैसे होता है, स्मूथ. So material that having uneven and irregular surface is called a rough material. Okay, and for example ट्री का bark जो है, okay, वो कैसा है, uneven है, that is the rough material. रॉक है, rough material. सैंड पेपर है, rough material. वुड है, rough है. Now smooth material, when you touch that material you feel the smooth and it having the even surface. उसका सरफेस कैसे होता है, इवन होता है. Okay, even surface, it is known as soft material. And the surface of smooth material do not have the ridges. उसके ऊपर ऐसे कोई हार्ड कवरिंग ridges नहीं होते. It is very smooth. For example, glass. आपने कोई भी ग्लास को टच किया, स्मूथ है. मैंने आपको बोला ये जो बोर्ड है कैसा है, स्मूथ है. आपने कोई फ्लावर्स के पेटल को टच किया, स्मूथ है. सिल्क साड़ी, सिल्क क्लॉथ, उसको टच किया, स्मूथ है. सो अंडरस्टैंड द टेक्सचर. टू टाइप का टेक्सचर होता है, दैट इज रफ मटेरियल एंड स्मूथ मटेरियल. ओके, अंडरस्टैंड अप टू दिस. Okay, now there are so many things which are present in our surrounding and they are classified on the basis of states. उसका classification होता है on the basis of states. Normally there are three states of the substance: solid state, liquid state, gas state. But in advanced study there are again two states, that is Bose-Einstein condensate, and fifth one is plasma. Okay, Bose-Einstein condensate and next one that is the plasma. And normal condition में there are three states of the matter, that is solid, liquid and next one that is gas. Now we have to see the information of solid and next one liquid and next one is gas. So material are classified. Okay, और आपके रूम में, आपके साइड में जो भी सब्सटेंस है उसका क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लस्टरस, नॉन लस्टरस, हार्ड, सॉफ्ट, rough material, smooth material, solid, liquid, gas. Okay, now first I teach you the property of solid. Solid having the fixed shape and volume. Solid का shape कैसे होता है? Solid having fixed shape. Solid को fixed shape है? Yes. Solid having fixed volume. Okay, volume means amount of space occupied by the object. Amount of the space occupied by the object, that is known as volume. For example, ये टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने लैपटॉप रख दिया है, तो लैपटॉप ने इतनी जगह ले ली, तो ये क्या हो गया, लैपटॉप का वॉल्यूम. ओके, ये पूरा टेबल है, यहाँ पे मैंने इतने सारे बुक्स रख दिए, तो ये बुक्स का क्या हो गया, वॉल्यूम, क्योंकि उतनी स्पेस उसने क्या की, ऑक्यूपाई की. सो अमाउंट ऑफ स्पेस occupied, that is known as volume. Now what about the particles arrangement? In the solid, particles are tightly packed with
लीस्ट इंटरपार्टिकल स्पेस। ओके, सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड। ओके, ये जो पार्टिकल्स में ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है, पार्टिकल्स। एंड सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड वी कॉल इट एज अ टाइटली पैक्ड। And in between the particle there is a least, there is a no interparticle space। ये दो पार्टिकल है, इसके बीच में कहीं पे तो आपको स्पेस दिख रही क्या, नो, देयर इज अ नो इंटरपार्टिकल स्पेस। इंटरपार्टिकल स्पेस मींस दो पार्टिकल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, देयर इज अ नो इंटरपार्टिकल स्पेस। ओके, ये जो पार्टिकल्स है कैसे, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, देयर इज अ नो इंटर पार्टिकल स्पेस। सॉलिड कैन नॉट मूव एंड हेंस सॉलिड कैन नॉट फ्लो। ओके, सॉलिड फ्लो होता है क्या, नो, सॉलिड डू नॉट फ्लो। ओके, सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो होता है नो। ओके, सॉलिड मूव होता है, इसको मूव होने के लिए जगह है क्या पार्टिकल्स को, नो, टाइटली पैक है, वो मूव ही हो नहीं सकते। ओके, एंड सॉलिड कैन नॉट मूव एंड सॉलिड कैन नॉट फ्लो एंड सॉलिड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस। सॉलिड को हमने कॉम्प्रेस करके देखा, सॉलिड कॉम्प्रेस होता है, नो, सॉलिड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस, सॉलिड कॉम्प्रेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल डस्टर है, मैं कॉम्प्रेस कर रही हूँ, कॉम्प्रेस होता है, नो। बट स्पंज एक्सेप्शन है, स्पंज सॉलिड होके भी कॉम्प्रेस होता है, स्पंज, वैक्स, ओके, एक्सेप्शन है, कॉटन, ओके, कुछ एक्सेप्शन है, वो छोड़ के बाकी के सॉलिड कॉम्प्रेस नहीं होते। ओके, सॉलिड कैन नॉट compress। Understand the properties of solid? Yes. Okay. Now next one, that is properties of liquid. Okay. Now next one, that is property of liquid. So liquid को fixed shape है? No. Liquid do not have fixed shape. Okay, it take the shape of container। वो क्या करता है, do not having definite shape, it take the shape of container। जिसमें आपने लिक्विड डाला उसका शेप उसको आ जाता है। एंड व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, लिक्विड को वॉल्यूम है, यस, ओके, लिक्विड हैविंग द वॉल्यूम, लिक्विड को वॉल्यूम है। नाउ व्हाट अबाउट द पार्टिकल्स अरेंजमेंट इन द लिक्विड्स। ओके, ये जो लिक्विड से, लिक्विड के जो पार्टिकल्स है कैसे होते हैं, दे आर लूज। ओके, सॉलिड के कैसे, टाइटली पैक, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे है, टाइटली पैक। लिक्विड के कैसे, दे आर लूजली पैक एज कंपेयर्ड विथ सॉलिड एंड ओके, एंड दे आर हैविंग इंटर पार्टिकल स्पेस। देखो इसमें आपको स्पेस दिख रही है, दे आर हैविंग द इंटर पार्टिकल स्पेस। लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस होती है, यस, लिक्विड हैविंग द इंटर पार्टिकल स्पेस होती है, यस। लिक्विड फ्लो होते हैं, यस, लिक्विड मूव होते हैं, यस, लिक्विड फ्लो भी होते हैं, लिक्विड मूव भी होते हैं। नाउ लिक्विड को हमने कॉम्प्रेस किया तो कॉम्प्रेस होते हैं, यस, बट लिटल। ओके, इतना ज्यादा कॉम्प्रेस नहीं होते हैं, होते हैं। सॉलिड कॉम्प्रेस होते हैं, नो, सॉलिड डू नॉट कॉम्प्रेस। लिक्विड होते हैं, यस, टू द स्मॉल एक्सटेंट, स्मॉल एक्सटेंट में लिक्विड कॉम्प्रेस होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन अबाउट द गैस। ओके, नेक्स्ट वन अबाउट द गैस। गैस को फिक्स शेप है, नो, गैस डू नॉट हैविंग फिक्स शेप। गैस को फिक्स वॉल्यूम है, नो, गैस डू नॉट हैविंग द फिक्स वॉल्यूम।
देन व्हाट अबाउट द पार्टिकल, गैस के पार्टिकल कैसे होते हैं? दे आर वेरी वेरी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके, दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। देयर पार्टिकल्स आर वाइडली पैक्ड and they are very very apart from the each other. And what about the interpart? देखो फर्स्ट की डायग्राम देखो, यहाँ पे स्पेस है, सॉलिड में स्पेस है, नो, लिक्विड में है स्मॉल इंटरपार्टिकल स्पेस है। व्हाट अबाउट द गैस? नोवर इंटरपार्टिकल स्पेस। ओके, गैस में इंटरपार्टिकल स्पेस कैसा है? मोर इंटरपार्टिकल स्पेस। इंटरपार्टिकल स्पेस मींस पार्टिकल के बीच में गैप जो होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरपार्टिकल स्पेस। यस, फिक्स शेप नहीं है, फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है। गैस को दोनों नहीं बेटा, फिक्स शेप भी नहीं है, फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है। देन पार्टिकल कैसे होते हैं? मोर इंटर पार्टिकल स्पेस। एंड गैस फ्लो होते हैं। यस, गैस गैस फ्लो, गैस फ्लो होते हैं। गैस मूव होते हैं। यस, गैस मूव होते हैं। एंड गैस को हमने कंप्रेस किया तो गैस कंप्रेस होते हैं। यस, ओके, गैस आर इजी टू कंप्रेस। ओके, गैस इजीली कंप्रेस होते हैं। दैट्स व्हाई हमारे किचन में जो सिलेंडर यूज करते हैं उसमें गैस फिलअप किया होता है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं, उसमें गैस फिलअप होता है। गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। यस, ओके, हाईली कंप्रेस, बिकॉज उसके पार्टिकल में बहुत सी जगह होती है, इंटर पार्टिकल स्पेस मोर, दैट्स व्हाई गैसेस आर हाईली कंप्रेस। एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स बहुत से आपके रूम में, आपके टेबल है, चेयर है, फैन है, बुक है, नोटबुक है, लैपटॉप है, चार्जर, सो मेनी। एग्जांपल ऑफ लिक्विड, वाटर है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ऑयल है, मिल्क है, टी है, कॉफी है, जूस है, सो मेनी। Okay, then example of gases. Okay, ऑक्सीजन गैस है, ओके, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ओके, so those are the example of gases. नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है। those are the example of gases. So, is it okay about the solid liquid gas? Is it okay, dear students? Yes, ma'am. Okay. So, हमारे चैप्टर का हेडिंग क्या है? सॉर्टिंग द मटेरियल। हमें मटेरियल को क्या करना है? सॉर्ट करना है। सॉर्ट मीन्स ग्रुप, मटेरियल के ग्रुप बनाने हैं। सो ग्रुप बनाने के लिए हम कौन कौन से प्रॉपर्टी यूज करते हैं? लस्टरस, नॉन लस्टरस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, रफ टेक्सचर, स्मूथ टेक्सचर। देन स्टेट, स्टेट में कितने स्टेट्स है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके साथ में बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। दिस स्टेट occur at very very low temperature। जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, occur at very very low temperature। and next one, that is plasma। okay, how many states of matter? नॉर्मली देखा जाए तो 3 स्टेट्स है, बट वैसे देखा जाए तो 5 है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा and Bose Einstein condensate। to this plasma temperature is very very high। okay, and substance are present in the form of ions। okay, सन के पास जो रिएक्शन है that is प्लाज्मा। okay, वहां पे जो हाइड्रोजन हेलियम में जो रिएक्शन होती है that is the प्लाज्मा। एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा में टेम्परेचर कैसे होता है? वेरी वेरी हाई। ओके, yes, there are total 22 states। very good।
चलो, so understand dear students about the states of matter. Okay, बेटा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ऑकर एट वेरी लो टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर टू मच लो होता है वहां पे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट टेस्ट होती है, एंड जहां पे टेम्परेचर वेरी हाई होता है वहां पे प्लाज्मा होता है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस दैट इज द सोल्यूबिलिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या? दैट इज सोल्यूबिलिटी. सो okay, so the ability of the substance to dissolve in a liquid is called solubility. Chaitanya, you can see the video, YouTube video. Okay, है YouTube पे बहुत से वीडियो है, देख लो. Okay, so yes, the ability of the substance to dissolve in a liquid is called solubility. So solubility में टू टाइप के सब्सटेंस है, that is soluble substance and next one insoluble substance. Okay, soluble substance and next one is insoluble substance. Okay, ये कब होते हैं? जब सॉलिड लिक्विड होते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं that is soluble, insoluble. बट दोनों सब्सटेंस, दोनों लिक्विड है तब हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मिसेबल सब्सटेंस एंड नेक्स्ट वन इज इमिसेबल सब्सटेंस. ओके, at that time we are using miscible and next one is immiscible. जब दोनों लिक्विड होते हैं, ओके, दोनों लिक्विड होते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट, तो हम यूज करते हैं मिसेबल एंड इमिसेबल. एंड सॉलिड एंड लिक्विड होते हैं, at that time we are using the soluble substance and next one is insoluble substance. So substance that dissolve in a given liquid, that is known as soluble substance. For example, sugar. Okay, sugar dissolve in water, so sugar is soluble substance. Okay, sugar is soluble substance. Then next one sand. sand है, chalk powder है. Sand plus water, chalk powder plus water, it give the insoluble mixture. Okay, क्या होता है? Sand plus water, insoluble. So substance that do not dissolve in a given liquid, that is called insoluble. For example, sand plus water, stone plus water, chalk powder plus water, that is the insoluble. Now दोनों लिक्विड है तब सोल्यूबल इंसोल्यूबल वर्ड यूज नहीं करना है. एक सॉलिड है एक लिक्विड है तब आपको क्या यूज करना है? सोल्यूबल इंसो, आपको ध्यान में रखना है. ओके, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, डिजोल्व हो गया सोल्यूबल. एक सॉलिड है एक लिक्विड है, डिजोल्व नहीं हुआ इनसोल्यूबल. बट जब दोनों लिक्विड होते हैं तब सोल्यूबल इनसोल्यूबल वर्ड नहीं यूज करते हैं. वी आर यूजिंग द वर्ड that is miscible and next one immiscible. So liquid, एक लिक्विड है जो दूसरे लिक्विड में मिक्स हो जाता है, that is called miscible liquid. Okay, liquid that dissolve in a given liquid, that is called miscible liquid. फॉर एग्जाम्पल देखो, आप लेमन जूस लो, उसमें वाटर ऐड करो, मिक्स हो जाता है. यस, सो लेमन जूस क्या हो गया? मिसेबल. ओके, देन नेक्स्ट वन अल्कोहल. अल्कोहल लो, उसमें वाटर ऐड करो, मिसेबल. ग्लिसरीन, ओके, ग्लिसरीन, उसमें वाटर ऐड करो, मिसेबल. हनी, उसमें वाटर ऐड करो, मिसेबल. मिल्क, वाटर ऐड करो, मिसेबल. नाउ नेक्स्ट वन, the given liquid is not dissolved into the another liquid. Okay, so the liquid that do not dissolve into the another liquid, that is called immiscible. Example is oil plus water, petrol plus water, diesel plus water, kerosene plus water. Okay, and यहाँ पे मैं लेती हूँ
लेमन जूस में तो हम अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल प्लस वाटर. ओके, अल्कोहल प्लस वाटर. डोंट यूज द व्हाइट बोर्ड, अदरवाइज आई विल रिमूव फ्रॉम द ग्रुप. ओके, डोंट यूज द व्हाइट बोर्ड, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द ग्रुप. जो भी कोई है उसका नाम लिख के आता है. मेरा जो जूम है ना थोड़ा सा एडवांस है. किसी ने भी व्हाइट बोर्ड स्टार्ट कर दिया उसका नाम मुझे फास्टली दिख जाता है. आपने देखा होगा नॉर्मल जूम में क्या होता है, 40 मिनट्स के बाद मीटिंग एंड होती है. मेरा जूम 2 आवर 3 आवर 5 आवर कितने भी आवर चलता है. मैंने पेड किया है, पेड जूम है. आई पे 1500 रुपीज पर मंथ. सो किसी ने भी व्हाइट बोर्ड स्टार्ट किया मुझे तुरंत समझ में आ जाता है. डोंट यूज द सच सिली थिंग. ओके, आप पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे ज्वाइन हुए, पढ़ाई ही करो. डोंट डू द पास टाइम. साइंटिस्ट बनना है ना, होमी बाबा बाल शास्त्रज्ञ बनना है ना, ऐसे टाइम पास करके थोड़ी साइंटिस्ट बनता है. बराबर है ना, टाइम पास करके थोड़ी साइंटिस्ट बनते हैं. दे नीड द डेडिकेशन, हार्ड वर्क, स्टडी, रिपीटेशन. ओके, सो petrol plus water, diesel plus water, kerosene plus water, oil plus water are the example of immiscible liquid. Okay, miscible liquid means the liquid which is dissolved in the other liquid, that is known as miscible. Very common example is lemon juice plus water, alcohol plus water. Then immiscible. Okay, next one is immiscible, the liquid that do not dissolve in a given liquid, that is called immiscible liquid. ओके, नाउ ये हो गए सॉलिड प्लस सॉलिड का, ये हो गया लिक्विड प्लस लिक्विड का. तो गैसेस भी लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं क्या? यस, देयर आर द टू गैसेस which dissolve in the liquid. First one is oxygen that dissolve. And oxygen क्या है? Gas. Oxygen क्या है? Gas that dissolve in a liquid, that is called dissolved oxygen, and which is taken by the aquatic plants and animal for the respiration. Okay, respiration के लिए हमें ऑक्सीजन लगता है. Now carbon dioxide. This carbon dioxide also mix in the water, that is called dissolved carbon dioxide, and this dissolved carbon dioxide is used by the aquatic plant to make their own food. So गैस भी लिक्विड में डिजोल्व होते हैं क्या? यस, ऑक्सीजन डिजोल्व इन लिक्विड, that is called dissolved oxygen. Carbon dioxide dissolve in liquid, that is called dissolved carbon dioxide. Okay, now I'm telling you some examples. You have to tell me that they are soluble or insoluble. Sugar है, sugar soluble है कि insoluble है? Soluble. Sand plus water, okay, insoluble. Milk वाटर में soluble. Oil insoluble, बट उसको हम मिल्क को हम मिसेबल बोलेंगे एंड ऑयल को इमिसेबल बोलेंगे. ओके, टर्म चेंज हो जाती है. देखो सॉलिड सॉलिड है, सॉलिड प्लस लिक्विड है तो हम सोल्यूबल इनसोल्यूबल वर्ड यूज करेंगे. लिक्विड प्लस लिक्विड है तो मिसेबल इमिसेबल. मिल्क क्या हो गया? मिसेबल. ऑयल क्या हो गया? इमिसेबल. Okay, understand dear student this solubility property? Okay. So dear students, we have started chapter number 4. हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? चैप्टर नंबर 4, that is sorting the material. Sorting means grouping the material. देखो हम बाहर गांव को, हमें गांव जाना है तो हम अपनी बैग पैक करते हो तो हम कैसे ग्रुप करते हैं? ओके, क्लोथ्स के ग्रुप, मेडिसिन, हम कैसे ग्रुपिंग करते हैं? तो सॉर्टिंग मीन्स ग्रुपिंग. ओके, ग्रुपिंग द मटेरियल. ओके, सो हमें क्या करना है? ग्रुपिंग करना है. सो दिस ग्रुपिंग और दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन. Okay, so material in our surroundings, so many things are present, material are present.
They are classified on the basis of this property. First one, that is lustrous, non-lustrous, hard substance, soft substance, rough material, smooth material. On the basis of state, solid, liquid, gas. On the basis of solidity, soluble substance, insoluble substance, miscible substance, immiscible substance. Okay, so on the basis of solubility, it is again classified into four: soluble substance, insoluble substance, miscible liquid, इसको हम लिखते हैं, miscible liquid and immiscible liquid. Okay, so understand, dear students, up to this. Okay, so next, a very high beta. बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए लो होता है एंड प्लाज्मा के लिए हाई टेम्परेचर होता है. बेटा राइटिंग वर्क नहीं है. ओके काव्य आवनी, आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में से पॉइंट करके हाईलाइट करके लर्न करना है. ये सभी लर्न करना है, रीडिंग करना है. राइटिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है. राइटिंग करने से अच्छा आप टेक्स्ट बुक लो एंड लर्न करो. ओके, लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट. राइटिंग में बहुत टाइम जाता है. यस वंशिका, वो बुक में से भी हम लेने वाले हैं. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज फ्लोटेशन. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज फ्लोटेशन. कोई सब्सटेंस वाटर में फ्लोट होता है एंड कोई सब्सटेंस वाटर में सिंक होता है. So that property is called flotation. The property of the material to float on the surface of water is called flotation. So there are some material. Okay, suppose मेरे पास प्लास्टिक का कोई भी छोटा सा स्केल है, टॉयज है, तो वो क्या होगा, वाटर के ऊपर फ्लोट होगा. और यहाँ पे मैंने सैंड, ओके, यहाँ पे मैंने स्टोन लिया, बिग साइज का स्टोन लिया, तो स्टोन वाटर में क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा. ओके, मेरे यहाँ पे लॉक है, बिग साइज का लॉक है, तो लॉक भी क्या हो जाएगा, सिंक. ओके, कोई प्लास्टिक की स्मॉल उड़न का स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या होगा, फ्लोट. ओके, सो सम मटेरियल फ्लोट ऑन द वाटर and some material sink in the water. आप भी करके देखो, इजी एक्टिविटी है. कोई भी आपके बकेट में वाटर लेना है, so many things you have to add. ओके, आपको क्या करना है, बहुत से अलग अलग थिंग ऐड करके देखना है. some material are float on the water and some material sink in the water. so ऐसा क्यों होता है, why material are float on the water and why material sink in the water? So it is because of the density. Okay, it is because of the density. And the formula of density is equal to mass upon volume. Density का formula क्या है, mass upon volume. Okay, so the materials such as wood, cork, ice float on the water because having less density. Okay, कौन से मटेरियल वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं, those substance having less density. जिनकी डेंसिटी लेस है वो सब्सटेंस वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं. एंड those substance having more density, जिनकी डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है, वो सब्सटेंस वाटर में क्या होते हैं, सिंक होते हैं. ओके, so materials such as wood, cork, ice float on the water because they are less dense than the water. Material such as stone है, iron है, यस ठीक है ना बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना चैतन्य, इट्स ओके. मास के लिए कैपिटल एम यूज करते हैं, यहाँ पे डी यूज करते हैं, डेंसिटी के लिए डी यूज करते हैं, कैपिटल डी. ओके, सो अंडरस्टैंड कौन सा मटेरियल फ्लोट होगा जिसकी डेंसिटी कैसी है, कम, लेस. दोज मटेरियल हैविंग लेस डेंसिटी
float on the material. Those material having more density sink in water. Salty water. Yes. ओके देखो डेड सी है. ओके डेड सी है. डेड सी में हम स्विमिंग करने गए, मुझे स्विमिंग नहीं आती है. दो आई नॉट सिंक बिकॉज साल्टी वाटर की डेंसिटी कैसी है, मोर होती है. Yes, it is more easy to swim in salty water because density more. Okay, understand? Just show me your thumb. Okay, so density is equal to mass upon volume. Substance having less density, that substance float on the water. Substance have more density, sink in the water. Okay, now I am telling you some example. You have to tell me that is float or sink. Eraser है, eraser float होगा कि sink होगा? Okay, then stapler की पिन है, stapler की पिन float. सेफ्टी पिन float. then पेंसिल को हम शार्प करके फेंक देते हैं ना, ओके पेंसिल के ऊपर का float. ओके then प्लास्टिक स्केल float. leaf टेबल टेनिस बॉल ओके. स्टोन लिया तो सिंक. लॉक लिया तो okay, so like this some substance are float on the water and some substance sink. The material that are denser than the water will sink in water, where material that are lesser than the water will float on the water. Now kerosene plus water, oil plus water. ऑयल क्या होता है वाटर के ऊपर? ऑयल प्लस फ्लोट. फ्लोट ऑयल फ्लोट होता है क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कैसे है वाटर से? लेस. ओके ऑयल प्लस वाटर आप घर पे करके देखो ना, ऑयल ऊपर रहता है वाटर नीचे रहता है. व्हाई? ऑयल हैविंग लेस डेंसिटी, वाटर हैविंग मोर डेंसिटी. ओके देन yes. Okay, so understand the 6 property dear students. Okay, क्यों होते हैं different layer? Because of density. Okay, now next property, property number 7, that is magnetic material and non-magnetic material. जो student magnet chapter को present है उनको already पता है magnetic material and next one is non-magnetic material. Those material which are attracted toward the magnet, that is called magnetic material. Ion, nickel, cobalt, steel, those are the magnetic material. And जो magnet की तरफ attract नहीं होते हैं, they are non-magnetic. For example, wood है, rubber है, plastic है, they are the non-magnetic material. Now next property, that is conductor of heat. Okay, next property, that is conductor of heat, and next one that is insulator of heat. Okay, conductor and insulator. Okay, जो substance कंडक्ट करता है that is known as conductor, and जो substance कंडक्ट नहीं करता है that is called insulators. Okay, उसको हम क्या बोलते हैं? Insulators. Okay, insulator of heat. Okay, again two term है, conductor of electricity, conductor of electricity, and next one insulator of electricity, conductor of insulate, conductor of electricity and insulator of electricity. Conductor means जो सब्सटेंस कंडक्ट करता है, जो सब्सटेंस कंडक्ट करता है, that one is called conductor. Okay, so material that allow the heat, जिससे heat pass होती है, they are known as conductor of heat. So example is metals. आपके घर में देखो सभी किचन यूटेंसिल्स किसके बने हैं? मेटल्स.
बिकॉज मेटल हीट को कंडक्ट करता है और आपकी मम्मी जो भी कुछ कुकिंग करती है सब कुक हो जाता है। यस ना? हैव यू सीन यूटेंसिल? आपके घर में सभी यूटेंसिल किसके बने हैं? मेटल्स। मेटल के एग्जाम्पल कौन से हैं? कॉपर इज द मेटल, गोल्ड इज द मेटल, सिल्वर इज द मेटल, एल्यूमिनियम इज द मेटल, आयन इज द मेटल। ओके, ये सभी मेटल हो गए। ओके, आयन इज द मेटल, ये सब क्या हो गए? मेटल हो गए। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ इंसुलेटर ऑफ हीट, जो सब्सटेंस हीट को कैरी नहीं करते। ओके, जो सब्सटेंस हीट को कैरी नहीं करते, मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक हीट को कैरी नहीं करता है, वुड हीट को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ग्लास नहीं, एयर नहीं, पेपर नहीं। सो वुड है, रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, एयर है, पेपर है। ओके, दस आर कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ हीट। जो हीट को कैरी नहीं करते, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ हीट। जिसमें से हीट ट्रांसपोर्ट नहीं होती, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ हीट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोज मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगेन एग्जांपल इज मेटल। आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर है, उसके अंदर कॉपर की वायर होती है। ओके, और ऊपर से प्लास्टिक नहीं तो दोनों रहते हैं, कंडक्टर भी रहता है, इंसुलेटर भी रहते हैं। सो कमिंग टू अवर पॉइंट, दैट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोज मटेरियल through which electric current are flow, material that allow the electricity to pass through them are called conductor of electricity, and example is all metal are good conductor। बट ऐसे कॉमन आंसर देने से अच्छा है आपको मेटल्स के नेम याद चाहिए। गोल्ड मेटल है, यस। सिल्वर मेटल है, यस। कॉपर मेटल है, यस। एल्यूमिनियम मेटल है, यस। प्लेटिनियम मेटल है, यस। ओके, सो लाइक दिस आर द एग्जांपल ऑफ मेटल्स। ये सब क्या हो गए? आयन मेटल है, यस, आयन मेटल है। ओके, नो बेटा, रॉन्ग, यश रॉन्ग। ओके, सो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयन है, दज आर द metals. There are so many metals, but those are the few metals. Now, material that do not allow the electric current to pass through them are called insulator of electricity. इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं किया, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक, रबर आर द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या हो गए? इंसुलेटर हो गए। हैव यू सीन द वायर? आपके घर में जो इलेक्ट्रिक की वायर है, ओके, उसमें दोनों यूज होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वायर के अंदर क्या होता है? कॉपर। ओके, कॉपर क्या है? मेटल। हे वायफाय कनेक्ट करायला काय म्हणते बघ बरं, एकदा करून दे।
ओके, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर होती है, इन दैट बोथ आर यूज, अंदर कॉपर की वायर होती है, कॉपर आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऊपर ये रबर का कोटिंग होता है, दैट इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अंडरस्टैंड? किचन के जो यूटेंसिल है, उसकी जो हैंडल है, ब्लैक कलर के सब्सटेंस से बने रहते हैं, ओके, मेलामाइन के बने होते हैं, दे आर इंसुलेटर। जो यूटेंसिल के हैंडल है, हैंडल को हमने होल्ड किया तभी भी हमें हीट नहीं लगती है, बिकॉज हैंडल किसके बने होते हैं? इंसुलेटर। ओके, किचन के जो यूटेंसिल है उसके हैंडल किसके बने होते हैं? इंसुलेटर्स। ओके, ग्रिडल तवा, उसका जो हैंडल है वुड का बना रहता है, ओके, बिकॉज इंसुलेटर। ओके, सो मेनी थिंग्स है कि जहाँ पे दोनों यूज होते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखो, इलेक्ट्रिक मैन है, जब वो इलेक्ट्रिक का कोई भी वर्क करता है और रबर की स्लीपर वेयर करता है। इलेक्ट्रिशियन है, आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिशियन काम करने आया तो वो रबर की स्लीपर वेयर करता है, नहीं तो हम उसको वुडन का स्टूल देते हैं। ओके, वुडन, रबर क्या हो गया इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर्स, एंड वो इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है, उसको कोई शॉक नहीं लगना चाहिए, इसीलिए हम उसको वुडन टेबल देते हैं, नहीं तो वो खुद स्लीपर पहनता है। रबर क्या हो गया? इंसुलेटर। वुड क्या हो गया? इंसुलेटर। एंड वो खुद किसका काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी। सो अंडरस्टैंड द नेक्स्ट 8 नंबर प्रॉपर्टी। कंडक्टर, कंडक्टर्स दोनों के होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड इंसुलेटर, इंसुलेटर भी दोनों के होते हैं, दैट इज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट को कंडक्ट किया, कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट को कंडक्ट नहीं किया, इंसुलेटर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Okay, so now next one, classification of material on the basis of transparency. ओके, ये पॉइंट फिर से रिपीट हुआ है, मैग्नेट का भी रिपीट होता है मैग्नेट चैप्टर में, एंड ये भी लाइट चैप्टर में रिपीट होता है। सो देयर आर द 3 टाइप ऑफ मटेरियल। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सेकेंड वन इज ओके, हम ऑपेक लिख लेंगे, ऑपेक मटेरियल, एंड थर्ड वन इज ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। Okay, translucent material. So there are the 3 type of substance or 3 type of material, that is transparent material, translucent material, and yes, आपके बुक में भी होगा only, yes, transparent material, translucent material, and opaque material. So material that allow the light to pass through them, जिससे लाइट पास होते हैं, that is known as transparent material. For example, clear glass ट्रांसपेरेंट है, एयर ट्रांसपेरेंट है, वाटर ट्रांसपेरेंट है, सम प्लास्टिक लाइक पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट है, सो आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट. Now, those material through which light do not pass, okay, material that do not allow the light to pass through them, and that material is known as opaque material. For example, I have cardboard. Okay, now are you able to see my face? No. Okay, कि कार्डबोर्ड क्या हो गया? ये कार्डबोर्ड है, opaque object. ओके, सो जिसमें से लाइट पास नहीं होता है, द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर नोन एज ऑपेक मटेरियल. फॉर एग्जांपल, वुड है, कार्डबोर्ड है, मेटल है, ब्रिक है, स्टोन है, बुक है, वॉल है. देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ ऑपेक मटेरियल. Now third one is translucent material. Those material through which light is passed but partially. Okay, those material through which light is passed but incomplete, partially, that is known as translucent material.
फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी व्हाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर ऑयल लगा लेना है, घी लगा लेना है, सो दैट बिकम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. फ्रॉस्टेड ग्लास, बटर पेपर ट्रांसल्यूसेंट है, कलर्ड और फ्रॉस्टेड ग्लास ट्रांसल्यूसेंट है. ओके, टिश्यू पेपर ट्रांसल्यूसेंट है. कोई भी पेपर को हमने ऑयल लगा लिया, वो भी ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है. सो transparency, on the basis of transparency, material are classified as transparent, opaque and translucent. Okay, butter paper, milky frost glass, colored glass, oil on paper, tissue paper are the example of translucent material. So here I have completed your chapter number 4. ओके, आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, शॉर्ट चैप्टर था, 1 लेक्चर में हो गया. ओके, चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग द मटेरियल. सो मेकिंग द ग्रुप. ओके, मेकिंग द ग्रुप, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. हम ग्रुप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. एंड क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज. ओके, क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन से बेस पे करते हैं? सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी. एंड देयर आर द सम प्रॉपर्टी कि जिसके बेस पे हम सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं. देखो, ये रूम में सब्सटेंस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. डस्टर सॉलिड है, वाटर लिक्विड हो गया, रूम में एयर प्रेजेंट है, चलो गैस भी हो गया. ओके, सो लाइक दिस those are the some property. ये प्रॉपर्टी के बेस पे हम क्या करते हैं? सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी लस्टरस, नॉन लस्टरस. सेकंड हार्ड सब्सटेंस, सॉफ्ट सब्सटेंस, स्मूथ मटेरियल, रफ मटेरियल. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस. On the basis of solubility, on the basis of flotation or sea, that is on the basis of density, on the basis of magnetic material, non-magnetic material, conductor and insulator of heat, conductor and insulator of electricity, and on the basis of transparency, transparent material, opaque material and translucent material. Okay, so here your chapter number 4 today I have completed. Okay, all my dear students, मम्मी पापा एग्जाम के क्लास में राइटिंग नहीं है, बट यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 3 टाइम. जो डेफिनेशन है उसको अंडरलाइन कर लो. इफ यू वांट टू राइट डाउन अगेन इन योर नोटबुक, यू कैन. आपको ऐसे लगता है कि फिर से आपको लिखना है एज अ प्रैक्टिस, यू कैन. ओके, आप फिर से राइट डाउन कर सकते हैं. आपको लगता है कि नहीं, मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए. मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ऑपेक, सबकी डेफिनेशन आप फिर से लिख सकते हैं. बट लर्न तो कंपलसरी करना है. मैं आपकी राइटिंग नोटबुक नहीं चेक करूंगी, बट आपको लर्न करना है. सब चीजें आपके ब्रेन में रहनी चाहिए, बिकॉज फाइनल एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, आपको लर्निंग ज्यादा है. सेम चैप्टर आपको कितने टाइम रीड करना है? 3 टाइम. ओके, पूरा चैप्टर 3 टाइम रीड कर लो, डेफिनेशन हाईलाइट कर लो, डेफिनेशन लर्न कर लो. ओके, इज इट ओके माय डियर स्टूडेंट्स? सो देखो, आपके पास अभी बुक नहीं होगा तो अवनी, आई थिंक सेम चैप्टर इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. यस ना? सेम चैप्टर, सेम पॉइंट है आपके बुक में. यस काव्या? Okay, Mihir is in the meeting? No. Okay, same chapter is given in your textbook also. Okay, yes, Chaitanya, type the message. Okay, so reading is more important. आपको read करना है, आपको learn करना है. Okay. So this one is chapter number 4. बेटा, लस्टरस वाटर से रिलेटेड नहीं है. वाटर से रिलेटेड हम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट बोल सकते हैं कि
प्लेन वाटर, ऐसे स्टील वाटर कैसे, देखो आप खुद को देखो, आप दिखते हो वाटर में, तो ट्रान्सपरंट बोल सकते. लस्टरस मीन्स तुला कळालं नाही का अजून, शाईन, चमकतो. पाणी कुठे चमकतो? वाटर पाहिलं तू चमकताना? तुला लस्टरचं मिनिंग नाही कळालं का चैतन्य? शाईन, शाईन, की ज्या गोष्टी शाईन करतात त्याला लस्टर म्हणतात. सपोज मी कोई सी काही गोल्डची ज्वेलरी घातली तर ती शाईन करेल. सिल्वर आहे, मेटल आहे. ओके, आपके घर में देखो भगवान के पास में जो बर्तन होते हैं कॉपर के, अच्छे से क्लीन करने के बाद शाइन करते हैं. आपके किचन में यूटेंसिल है, स्टील के यूटेंसिल है, वो शाइन कर, जो भी शाइन करते हैं. डांस का कॉस्ट्यूम आप कुछ भी को रिलेट करते हैं. ओके, नहीं बेटा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी अलग थिंग है. डोंट मिक्स द टू थिंग. ओके, ल्यूमिनस मीन जो लाइट देते हैं, लाइट देते हैं. शाइन अलग है बेटा. देखो मैंने कुछ भी स्टील के ग्लास वगैरह मार्केट से न्यू परचेस किए तो वो शाइन करते हैं. जो शाइन करते हैं दे आर कॉल्ड लस्टरस. जो नहीं, अभी देखो ये कार्डबोर्ड है, शाइन कर रहा है, इसको शाइन है क्या? नो. अभी मेरे पास तो कोई मेटल की चीज यहाँ पे नहीं है, बट मेटल्स क्या करता है? शाइन करता है. हाँ ये देखो, ये ओके, दिस वन इज स्टील स्क्रू ड्राइवर, शाइन कर रहा है. हाफ पार्ट देखो शाइन कर रहा है. यस, सो जो शाइन करता है दैट इज लस्टरस, नहीं करता है नॉन लस्टरस. ओके, all my dear students, read the chapter carefully and daily you have to study 2 hours. ऐसे नहीं कि होमी बाबा क्लास में आपको स्टडी नहीं होती है. ओके, डेली आपको सेम चैप्टर 3 टाइम रीड करना है, पॉइंट लर्न करना है, मार्क करना है. डेली पढ़ाई रहती है होमी बाबा क्लास में. क्लियर? पार्थ मुंडे, इज इट ओके ऑन योर कैमरा? आई हैव नॉट सीन योर फेस, मुझे देखने तो दो कौन सा पार्थ है. पार्थ मुंडे, Shreyas, Srirame on your camera. Okay, so clear, dear students? Okay, chalo, bye. Bye. Okay, tomorrow there will be class on the same time and I start the next chapter. Bye bye. Okay, आपके पास ये बुक नहीं होगा, then you can read from your textbook. ओके, जो पोद्दार के स्टूडेंट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज सेम चैप्टर है उनके टेक्स्ट बुक में. चलो बाय. लेने वाली हूँ बेटा बाद में. बाय बाय.